Welcome to the online lecture of Sharadji Moro English High School. Okay, 10th standard students. Yesterday we completed till question number 4. Practice set 5.1, question number 4. Now today we'll continue from 5th question. Practice set 5.1. Question number 1, 2, 3, 4. We have already done. Now today continue from 5th question, that is show that points P, coordinates of point P are 2 and minus 2. Point Q 7 3, point R coordinates are 11 minus 1, and point S, that is coordinates are 6 minus 6, are vertices of a parallelogram. Okay, now here what you have to do, you have to prove that the given points are the vertices of a parallelogram. Okay, now parallelogram के vertices है ये. अगर आपको ये show करना है, so first what you will do, you will find suppose P Q R S. Okay, these are the 4 vertices. Now if they are the vertices of a parallelogram, so property क्या होती है parallelogram की? पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं, राइट, जो पैरेलल साइड्स होते हैं एक दूसरे के एग्जैक्टली वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड आउट द डिस्टेंस. मीन्स आप क्या करोगे, जो 4 साइड्स है उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे. पी क्यू, क्यू आर, आर एस. यू विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दीज 4 लाइन्स. And if the distance of these opposite sides, for example PS, QR and PQ and SR, if the distance are congruent, then they will be considered as the vertices of a parallelogram, else not. Okay, means condition क्या होनी चाहिए? They should satisfy the condition that they should satisfy the condition of a parallelogram. Opposite sides of a parallelogram are congruent. Okay, now we'll solve the question number 5. Question number 5. So what is given to us? First we will write the vertices. Point P is having the vertices as 2, minus 2. Point Q is having the vertices 7, 3. R is having 11, minus 1. And S is having 6, these are the points given to us. Now suppose if they are the vertices of a parallelogram, तो आपको किस किस का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा? PQ, side PQ, then you will find the distance of QR, then in third step you will find the distance of RS, and then you will find the distance of PS. Okay, तो 4 steps में आप क्या करोगे, ये 4 sides का distance find करोगे, and then last में आप compare करोगे distance को. Okay, PS QR के distance को compare करोगे and PQ and SR के distance को compare करोगे. अगर distance similar होगा, so it means they are the vertices of a parallelogram. Understood properly? So first, in first step what we will do, we will find the distance of side PQ. Okay, आप क्या करोगे, पहले side PQ का distance find करोगे. So point P and Q का distance find करना, it means x1 y1 x2 y2. Okay, so now we'll substitute the values. आपका फॉर्मूला क्या है? x2 minus x1 the whole square. तो x2 की वैल्यू क्या है? 7 और x1 की वैल्यू 2. So you will write here 7 minus 2 whole square. Okay, plus further x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So y2 is what? 3 and y1 is what? Minus 2. So we will write here 3 minus 2 whole square. Okay, now we will solve it. 7 minus 2, 5. 3 minus 2. Minus will become plus. So 3 plus 2 is again 5. So we will write here 5 square plus 5 square. So it means 25 plus 25, that is 50. Now 50 is not the whole square of any particular number. So what you will do here, what we will factorize it. Okay, आप क्या करोगे? 50 के factors निकालोगे. So you can simply write it as 25 twos are, right?
50 को आप क्या कर सकते हो 25 into 2 लिख सकते हो. So we will write here 25 multiplied by 2. Now we know 25 is the square of 5. So आप क्या करोगे 25 को स्क्वायर रूट के बाहर लेकर आओगे. ओके, so you will take out the 25 out of the square root. So we will get here 5 root 2. Okay, it means आपको क्या मिला, distance of PQ as 5 root 2. PQ का distance मिला 5 root 2. Now नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, क्यू आर का डिस्टेंस, राइट. पी क्यू के बाद किसका फाइंड करेंगे, क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग द सेम मेथड, सेम फॉर्मूला. ओके, क्यू आर. ओके, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 and 3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज व्हाट 7 3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या है 11 and -1. ओके, 11 and -1. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट. ये x2 है और ये x1 है, so x2 minus x1, so means 11 minus 7. So we will write it 11 minus 7 whole square plus y2 minus y1. y2 की वैल्यू क्या है -1, right, minus y1 की वैल्यू 3 है, so we will write it -1 minus 3 whole square. Now we will solve it further. 11 minus 7, 11 में से आप जब 7 माइनस करोगे, so you will get 4. minus minus plus 1 plus 3 4 and you will write here minus sign, right. Now 4 square is 16, minus 4 का square भी क्या हो जाएगा 16, because square of a negative number is always positive. 16 plus 16 is 32. Now as we know 32 is not the whole square of any particular number, so we will again factorize it. Okay, factor करने पे आपको क्या मिलेगा 16 2 32, right. Now 16 is the square of 4, तो आप 4 को क्या करोगे, you will shift this 16 out of the square root, so it will become 4. So our answer is what 4 root 2. It means we got the value of PQ as 5 root 2 and value of QR as 4 root 2. Okay, so two sides के remaining two sides के आपकी value मिल गई. अब जो remaining two sides है उसके भी value आपको क्या करना है find करना है. What we got here PQ. फर्स्ट स्टेप में पी क्यू का आंसर आपको क्या मिला था 5 रूट. उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्यू आर की वैल्यू मिली, दैट इज 4 रूट. ओके, नाउ थर्ड स्टेप. अब थर्ड स्टेप आप किसके लिए करोगे, आर एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए, राइट. सो आर के कोऑर्डिनेट्स है 11 -1 और एस के कोऑर्डिनेट्स है 6, -6. ओके, नाउ आर एस. सो x2 minus x1. x2 की वैल्यू क्या है 6, x1 की वैल्यू 11. So we will write here 6 minus 11 square plus y2 minus y1 square. y2 की वैल्यू -6 है, so we will write here -6 minus y1 की वैल्यू -1 है, so we will write it in bracket. Okay, whole square. Now 6 minus 11 will give you -5, so we will write here -5 square. Then -6 minus 1, minus will become +1, right. So -6 plus 1 whole square. अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, एंड देन -6 plus 1 मीन्स आपको क्या करना है माइनस करना है. 6 में से 1 माइनस करोगे तो आपको 5 मिलेगा एंड बिगर नंबर की साइन -5. ओके, सो व्हाट यू विल गेट हियर, again you are going to get here 25 plus 25, that is root 50. ओके, अब आपको क्या करना है रूट 50 को फैक्टराइज करना है, राइट. सो इट विल गिव यू 25 into 2, 25 multiplied by 2. So 25 is the square of 5, so आप क्या करोगे इसको आउट ऑफ द स्क्वायर रूट शिफ्ट करोगे. सो वी विल राइट हियर 5 रूट 2. इट मीन्स व्हाट वी गेट हियर, आपको एस आर की वैल्यू, आर एस की वैल्यू क्या मिली 5 रूट 2. ओके, ये क्या है आर एस की वैल्यू है, थर्ड साइड की वैल्यू. Next is remaining one PS. Okay, so we will find the value of PS in next step. RS we got as 5. Now remaining one is what PS. Okay, so now coordinates of P के coordinates क्या है 2 minus 2 given in the question, and
एंड एस के कोऑर्डिनेट्स है 6 minus 6. So we will substitute it to find the distance of point P and S. Now x2 minus x1 means 6 minus 2. So we will write here 6 minus 2 square plus y2 minus y1 means minus 6 minus minus 2. So we will write here minus 6 minus minus 2 square. 6 minus 2 is nothing but 4, and you will write get here minus 6 minus minus plus 2. So square of 4 is 16. Minus 6 plus 2 will give you minus 4 square. Okay. Now when you will solve it further, square root of 16 plus 16 means 32. Again what you will do? You will factorize it in 16 into 2. Now we know 16 is the square of 4. So we will take it out of the square root as 4 root 2. So what you got here? Value of PS 4 root 2. Now you have completed 4 steps. Means आपने जो 4 sides है उसकी value calculate की है PQ, QR, RS, PS. Now opposite sides. What are the opposite sides? PQ and RS, QR and PS. Now what you have to do? You have to compare the values. Now since PQ is equal to RS, QR is equals to PS, right? Therefore, जी सर, लिमना मिस में नहीं पता सर, मेरे लेक्चर में उन्होंने किए रहेंगे शायद, कुछ काम होगा तो मैं पूछती हूँ। ना मिस, आपने सर को कॉल किए थे क्या? नहीं किए थे सर, नहीं किए थे। ओके, अपोजिट साइड को क्या करना है आपको? कंपेयर करना है। सो नाउ सिंस PQ is equals to RS, right, and QR is equals to PS, right? Now आपको क्या करना है? प्रूफ करना है that it is a this quadrilateral, given quadrilateral is a parallelogram. So for a quadrilateral to be a parallelogram, opposite sides should be congruent, right? Now since they are congruent, opposite sides are congruent, you will write here since opposite sides are congruent, therefore quadrilateral PQRS is parallelogram, and point P, Q, R and S are the vertices of a parallelogram. Okay, understood properly? And points P, Q, R and S are vertices of parallelogram. Okay? So here we have completed 5th question. Now next question, question number 6. What is given in the 6th question? Question number 6. Show that the point A, B, C and D having the vertices -4, -7, -1, 2, 8, 5, 5, -4 respectively are vertices of a rhombus. Means आपको क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो एक पर्टिकुलर रॉम्बस है, रॉम्बस ABCD, तो ये जो पॉइंट्स है ABCD ये क्या है? उसके वर्टाइसेस है, ये आपको शो करना है। नाउ अब आपको ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले रॉम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट? वैसे रॉम्बस की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके 4 साइड्स जो होते हैं, ऑल द साइड्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट, मीन्स चारों भी साइड क्या होती है? इक्वल होती है, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, सिमिलरली आपको क्या करना है? सेम फॉर्मूला यूज करना है। A
पॉइंट ए और बी को यूज़ करके आप ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ओके। देन पॉइंट बी एंड सी को यूज़ करके आप क्या करोगे, बी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। देन सी एंड डी को यूज़ करके आप सी डी का डिस्टेंस, और फिर पॉइंट ए और डी को यूज़ करके आप ए डी का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। मीन्स अगर ए बी बी सी सी डी ए डी ये 4 साइड्स का डिस्टेंस सिमिलर आएगा, सो इट मीन्स दे आर द sides of a rhombus, okay. So you have to use the same method and solve the question number 6. Now next, question number 7. What is given here? Find x if distance between point L and M is 10. Now point L and M के बीच का distance, there are 2 points, point L and point M. इनके बीच का distance भी given है आपको 10. पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स है x, 7 एंड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट है 1, 15, ओके। तो आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर x की वैल्यू गिवन है वो फाइंड करना है, ओके। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे, LM का डिस्टेंस फाइंड करोगे, उसको इक्वेट करोगे 10 से, तो जो अननोन वेरिएबल अननोन टर्म है x की वैल्यू आपको मिलेगी, ओके। नाउ लेट अस सॉल्व द 7th क्वेश्चन। So first, what is given, we'll write, okay. Point L के कोऑर्डिनेट्स है x, 7 and point M के कोऑर्डिनेट्स है 1, 15, okay. And distance of point L, M is also given to you, that is 10, okay. Now what we have to find? We have to find the value of x, okay. आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। Now by distance formula, what we will do? We will use the distance formula. Distance of point L and M. As we know, what is the distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, okay. Now x2 x1 मीन्स ये क्या है आपकी, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू है, ये y1 एंड ये y2, ओके। सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। LM is equals to x2 minus x1 means x minus 1 square plus y2 minus y1, that is 7 minus 15 whole square, okay. Now as we know, the distance is what, 10, so we will write here 10, that is equals to x minus 1 whole square plus, now 7 minus 5 is 15 will give you 8, right, minus 8, क्या मिलेगी आपको वैल्यू, -8. Now x minus 1 whole square plus square of -8 will be 64, okay. Now what you will do, you will shift this square root to this side, okay. अब क्या करोगे, ये square root ये side shift करोगे, so when you will shift this square root to this side, it will become square, okay. Square of 10 is what, 100. So 100 is equals to x minus 1 whole square plus 64. अब आप क्या करोगे, 64 को भी ये साइड शिफ्ट करोगे, so when it will get shifted to the left side, it will become minus 100 minus 64, x minus 1 whole square. So 100 minus 64 will give you 36, right. 36 is equals to x minus 1 whole square. Now what you will do, again you will shift this square to लेफ्ट साइड, तो जब ये स्क्वायर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट. सो नाउ इट इज नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 36 x minus 1, ओके. So x minus 1 is equals to square root of 36. Now square root of a particular number will give you
टू रिजल्ट, मतलब कि स्क्वायर रूट दो पॉसिबिलिटीज है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, राइट। बिकॉज अगर आप -6 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तभी भी आपको 36 मिलेगा, +6 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तभी भी आपको 36 मिलेगा। इट मीन उसका स्क्वायर रूट +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, राइट। इट मीन फॉर द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, एक +6 के थ्रू आप सॉल्व करोगे और एक -6 के थ्रू आप सॉल्व करोगे, ओके। सो देयरफॉर x is equal to +6 -1 will become +1, that is 7, or x is equal to -6 +1, right। प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करोगे you will get 5 and bigger number के साइन -5 रहेगी, okay। it means x may be +7 or it may be -5, therefore your final answer is x is equal to 7 or -5, okay। understood properly। आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे, पॉइंट L और M के, बट उसमें से L का जो x कोऑर्डिनेट था वो अननोन था, तो उसको यूज़ करने के लिए आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करे। डिस्टेंस की ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी 10, वो यूज़ करके आपने सॉल्व करे। एंड यहाँ पर आपने क्या करे, स्क्वायर रूट लिए, तो स्क्वायर रूट लेते टाइम आपको ये पॉइंट याद रखना है कि दो नंबर हो सकते हैं स्क्वायर रूट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ओके। तो आप +6 से लेके एक बार सॉल्व करोगे तो 7 मिलेगा, -6 से लेकर सॉल्व करोगे तो आपको -5 मिलेगा। इट मीन्स x may have two different value, either 7 or -5, understood। so here we have completed 7th question। now last question of this practice set, question number 8। Question number 8, show A, B, C are vertices of an equilateral triangle, okay। now what you have to do, आपको शो करना है कि पॉइंट A, B, C एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। सो इट्स अगेन वेरी सिंपल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करना है आपको। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों भी साइड्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इट मीन्स ए बी, इफ यू विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, तो तीनों भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। इट्स अगेन वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, ए बी, बी सी एंड ए सी का डिस्टेंस फाइंड करोगे एंड आप उसको इक्वेट करोगे इफ इट सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मीन्स अगर तीनों भी डिस्टेंस सेम आते हैं तो दे आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एल्स दे आर नॉट, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पॉइंट ए के वर्टाइसेस है 1, 2, then vertices of B are 1, 6 and vertices of C are 1 plus 2√3, 4, okay। now one by one we'll find by the distance formula, okay, by using distance formula। फर्स्ट आप क्या करोगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करोगे, राइट।